Hi, today we are back with a great day and great things to learn for listening test. And you must be aware that the listening is for 40 minutes and 30 minutes is for test and 10 minutes will be given to transfer answers to the answer sheet, and there will be OMR sheet for listening and reading both modules, and OMR sheet will be printed on both sides for both modules, and it will have 40 questions. Your listening module will have 40 questions and has 4 sections, and each section contains 10 questions, and each question worth 1 mark. And please remember, there is no any negative system, and as I have told you, you must guess. You should always guess, never leave any blank in your answer. For today, we have some new things to learn, and I also prepared tips for you to improve score and how to do your listening test. शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि there will be no any repeat of audio. You will not be able to listen to again as it is an exam, obviously. इंस्ट्रक्शंस का आपको बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है, अच्छे से मतलब समझ गए आप किस तरह से अच्छे से। इंस्ट्रक्शंस विल बी इन ऑडियो when you listen to the when you are listening to the test, as well as there will be instructions on booklet. When you have enough time, you can read them, and it is also important to be aware of instructions. हेडफोन्स, जैसे कि हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया है, मैंने आपको बताया हेडफोन्स बहुत ज़रूरी है। नॉइस कैंसलेशन वाले हेडफोन आप रख सकते हैं, प्रैक्टिस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ऑल्सो विल हेल्प यू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स। प्रैक्टिस विथ OMR. There will be OMR test for your listening test, and you must practice with OMR test only. In our class also we make students practice with OMR sheet, and OMR sheet इसलिए रखते हैं क्योंकि we have discussed in previous lectures that when students transfer answer to the answer sheet, they always make some kind of mistakes which are related to when they transfer answers partially, and sometimes they make spelling related mistakes. So avoid this kind of things. You must practice with OMR sheet, and it will be a natural practice, and it will also make you feel that you are taking an actual test. So it is very important. सेक्शन वाइज प्रैक्टिस इसलिए करना है क्योंकि कभी कभी आपको जब लिसनिंग का जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ सेक्शन में आपको कुछ क्वेश्चन तो दिक्कत आएगी, आपका स्कोर थोड़ा लो हो जाएगा कुछ सेक्शन की वजह से। जैसे कि सेक्शन जो 4 है, 4th सेक्शन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट इन कंपैरिजन विद अदर सेक्शंस, सो यू मस्ट practice it alone, by just removing section 3. You can forward your listening to the section 4 and practice it repeatedly, and you will be able to score higher in comparison with your previous test of section 4 or whatever section you are struggling in. Announcements. There will be several announcements in examination hall, and you will be listening to them frequently, and आपको उससे कोई आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको टेस्ट नहीं हो रहा है, आपको उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपको जब जो भी सिखाया गया उसका आपको ध्यान रखना है, अनाउंसमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करें। अनाउंसमेंट में बहुत ही ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको हो सकता है एग्जाम में भी डिस्टर्ब करे और आप उसकी कुछ ज़्यादा ही चिंता करने लगेंगे। ऐसा नहीं करना है। टेस्ट में ऑलवेज जो भी कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं तो उसमें ऑलवेज अनाउंसमेंट्स होते ही है, आपको उसकी आदत डालनी होगी। प्रैक्टिस लिसनिंग टू मोनोलॉग्स, डायलॉग्स एंड डिस्कशंस, एज वी हैव learned that all sections in listening have several patterns that what kind of content they put in all 4 sections. Monologues, dialogues and discussions, you will have to practice this kind of conversations. Lectures and podcasts you can listen to, you can watch videos on YouTube. By doing so, you will improve your this kind of conversations which are in as monologues will be in section 2 and section 4. Only one person speaks, and in section 1 there will be dialogue and 2 people talk, and we have already learned about that. Discussion will be in section 3. आप जो भी इंग्लिश में डिस्कशंस आप जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट सॉरी जो आपकी फेवरेट चीज़ है, जो भी आपकी हॉबी है, उसमें से कुछ पिक कर लेंगे। हॉबीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं आपका स्किल्स इंप्रूव करने में, और एग्जाम में आपको
हेल्प मिलेगी. फॉर एग्जांपल इफ यू आर fond of watching any English or American television show, then you might get a little bit help in empowering your skills, such as discussions and monologues. There are several shows you can watch and improve listening to English, and you will get yourself used to it, and you will be able to understand much more easily than when you don't do this kind of thing. So always keep yourself busy listening to English, and also you can practice speaking sentences and preparing English things in your mind. So it will also help you understand listening and understand other modules also. आज के लिए इतना है. अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ नई चीज़ के साथ, नए नई बातें जो कि आपको will help in improving your all kind of modules.